Assalamu alaikum, everyone. Um, my name is Ammar. I am um, part of the core team for Self-Awareness Group. We have with us Mr. Zubair Asghar. He also um, is part of the core team, and he is MS in psychology. We have with us also Mr. Bilal. He is the founder of Self-Awareness Group. And do we have Miss Iram Arshad with us? No, I don't think she was able to join in yet, but she's also part of the core of the group. Let me start off by explaining what Self-Awareness Group is. We have briefly described all the team already. Our mission basically is to break the stigma associated with mental illness and create awareness about all the mental illnesses like depression, anxiety, stress, mostly. And to tell everyone that depression, anxiety, stress is treatable and the ways it can be treated. Our vision is basically to bring a positive change into people's lives who are suffering from these illnesses, and also to create awareness for individuals about their mental health. We were founded, Self-Awareness Group is basically a non-profit organization established back in 2019. Our objective is to create awareness of mental health issues in the society. We also like to encourage the people to have more openness, acceptance, and courage to talk about experiences and feeling towards self-awareness and mental health, and also their therapeutic effects. We work towards creating a stigma-free environment and also to bridge the gap among help seekers and counselors. Self-Awareness Group educates the community to help struggling friends, relatives, colleagues, and strangers through a positive word of healing. So that's what we are. We've had we've had some experiences in the past, and why don't I let Mr. Bilal take it from here? Mr. Bilal. Okay. Yeah, Assalamu alaikum. Thank you everyone for joining in. As you all know that the main purpose of self-awareness group is to let people know that our society is in deep trouble right now, and this is the dire need of the society, that we need to raise awareness and voice in the society. So everyone need to talk about it. So what self-awareness group is trying to do is we are giving a platform to everyone who is just trying to seek help, and the other ones who want to provide help to everyone. Now, the problem in the society right now is that people are not willing to take remedies. They are not willing to accept this illness, and they are not willing to go for treatments. One more thing I would like to add is, due to the supply and demand of this region, like psychologists, psychiatrists, so they're very small in demand, and most of the people do not pursue these as a careers because they think this is not very commercial. This is not any very profitable professions. So, and one more thing is, for a normal person, it's not very easy and convenient to approach these doctors, mental health practitioners. So what we are trying to do is we are trying to bridge the gap between two ends. And what we're gonna do is we're gonna let both ends to meet together. We are going to provide a platform for everyone to express their feelings, the challenges they have faced in their life, in past experiences. They can share their experiences, their struggles, how they cope up with the mental illness.
And what they're gonna do is, because if someone is sharing his story, his or her story, so that might be a survival guide for some other people's. So right now, there's a campaign we are already running on social media. Is like I'm listening hashtag I'm listening, where people we are here to listen the issues of people are facing. Right now, we are getting response from different regions in Pakistan, and I'm very thankful to you guys because we a lot of our the volunteers have joined us from different cities in Pakistan. We do have professional psychologists on board who are working 24/7 to provide help through the patients, and they're willing to support everyone who is available. Uh, Apart from these professionals, we do have students, we do have researchers, we do have content writers in our organization, as in a volunteer team. No, but how we started is when we started this, we've tried to hit on the corporate sector. We tried to raise awareness to corporate culture. But later on, we decided to stop these sessions because they were not as much productive. Rather than we can get the experiences out of from the end patients. So we need to express as much as we can, so we can lose the baggage everyone is carrying behind them, so they can feel free for some time. They can share their stories, their issues to their family, friends, to anyone they feel comfortable with. So the purpose of the this orientation session is to let you all know that we are working for this cause, and I would really appreciate if you guys are internally motivated for this cause and willing to spend some time. What we're gonna do is we will be evaluating all our volunteers on a permanent basis, and we will be reaching out all the volunteers with all the benefits we can provide them. We can support them to raise awareness, to spread this message on social media to their peers, to their family and friends. But the point is, it's not about branding self-awareness group anywhere. The whole purpose, the whole essence of this campaign is to pass on the message. It's not about spreading self-awareness group as a brand, but the key point is to highlight the issue in society and to pass on the message. Either you do it from your platform, we're going to do it from any other platform, any other NGOs. We just need to be part of this campaign, so we can address the issues in our society. I'll open the floor for everyone. I would like to have you guys speak about your views on this, how you guys look future for the progress for this awareness group, and how do you want us to, I mean, evolve this thing in a permanent way that everyone can join in with the passage of time, who can participate, how everyone can participate. We have shared the agenda with you guys and they can work on this so Amar, I think we should open the floor for everyone to give their comments, their views, and how we gonna proceed. Okay, thank you, Bilal. May I remind everyone that this is being recorded, so don't be shy. This recording is just for learning purposes. So how about we start alphabetically? Well, Miss Aliza, I'd like you to speak a little bit about what Mr. Bilal was asked us to do. Over the floor. Okay, so Assalamu alaikum. Am I audible? Walaikum salam. Yes, I can hear you. Okay, so I guess the motive of this group is very important because I myself is a psychology student and I know how the stigma has been evolved throughout the year, and I know how people are suffering, but they are afraid of, accepting that they are suffering from a mental illness or something like that. Yeah, you're. So I think, we can, the target population can be the students because they're easy to grab the attention, and they are very much prone to mental illness in this era. Okay, thank you, Miss Aliza. Aliza or Alize? Aliza. Aliza.
Yeah. Okay, thank you, Miss Eliza. But we don't have to speak in English. If you like, we can all speak in the language we prefer. और अगर किसी ने उर्दू में comments देने तो it's perfectly okay. Let's start with Harim. Miss Harim Khizar. Assalamualaikum everyone. Walaikum salam. I'm Harim Khizar, and right now I'm running a school with the same purpose that we build awareness. ऐसा नहीं है कि essential नहीं है, but the thing is we don't have direction. Nobody is there to guide students. Even कि हम syllabus हो जाते हैं, इसके बावजूद हमें जो है वो सही guidance नहीं कर पाते. So we need to talk about कि mental illness is not something to shame about. आप इसके बारे में बात कर सकते हैं. If you are feeling some kind of problem, तो आप शेयर करें और इसका बेहतरीन हल दो बंदे मिलकर निकाल सकते हैं. तो we need to talk about first कि mental illness के लिए आपको किसी से भी कंसल्ट करने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए. इसका मतलब ये नहीं होता कि खुदा न खास्ता हम मेंटली कोई प्रॉब्लम है. हर ऑब्वियसली वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, सो वी गो थ्रू फेजेस ऑफ लाइफ. तो डिप्रेशन भी होगा, एंजाइटी भी हो सकती है, एक्साइटमेंट. एवरी फीलिंग हैज सम काइंड ऑफ रिएक्शन. तो सबसे पहले तो हमें ये बताने की जरूरत है कि आपको अगर कोई बंदा साइकियाट्रिस्ट सजेस्ट करता है या आपको कहता है कि कोई आपको थोड़ा सा मेंटली कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी से कंसल्ट करें, तो हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि खुदा ना आप मर्ड है या पागल है. एक दूसरी बात ये कि जैसे मैम अभी हबीब ने कहा कि हमें किड्स को लेके चलना चाहिए. तो ये ऑब्वियसली हम अगर उनको सिखाना शुरू करेंगे लाइफ के बारे में और लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में इन स्कूल, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. कि बच्चों को मैं एक्सपीरियंस के बारे में बताती हूँ कि लाइफ के बारे में जो है ना वो किस तरह से हम चीज़ों को देख सकते हैं. तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं. ये 2-3 स्टेप्स जो कि हम छोटे छोटे लेंगे, इंशाल्लाह वी विल मेक द डिफरेंस. आई एम वेरी होपफुल अबाउट दैट एंड दैट्स व्हाई आई जॉइन दिस प्लेटफॉर्म. कि हमारी सोसाइटी का सबसे जो मेजर मसला है वो मे भी किसी को इकॉनमी लगता होगा, लेकिन मेरे लिए जो सबसे ज्यादा जो हमारी सोसाइटी को मसला फेस हो रहा है वो ये है कि हमारी ना रिएक्शन बार दफा बहुत हम ओवर रिएक्ट करते हैं चीजों के बारे में. तो वो इस चीज के बारे में बात करने की बहुत सख्त जरूरत है कि वी नीड टू थिंक पॉजिटिव, we need to be positive, we need to help positively. और इस तरह की चीजें तभी आएंगी जब कोई बात करेगा इसका. That's all from my side. Thank you. That was very insightful. And yes, हमें बहुत ज़रूरत है to especially children. We've already released 2 articles focusing on children themselves. So that's excellent. Thank you, Ms. Harim. Let's go next to Ms. Hina Khatak. Assalamu alaikum. Am I audible? Yes, you are, Ms. Hina. Okay. First, I'll introduce myself a little bit. I am a clinical psychologist और मैं पेशावर से belong करती हूँ. So first, I would really appreciate Mr. Bilal कि उन्होंने मुझे approach किया according with their group और उनका जो motive था, जो agenda था. Like we have seen, I won't stigmatize or I won't target anyone और मैं condition नहीं कर रही हूँ किसी भी चीज को. But you know, we have heard people saying let's talk about mental health, let's talk about stigmatization, let's talk about this, let's talk about that. But you know, at the end we see people dying or God forbid they सुसाइड कर लेते हैं और दे एंड अप इन रियली बैड कंडीशन. सो आई वुड लाइक टू ऐड कि कुछ इस तरह से ये इनिशिएटिव हो, लाइक ये जो ग्रुप में जितने भी एजेंडा है ग्रुप का, इसको इस तरह से फॉलो किया जाए सो दैट वी लेट पीपल टॉक. लाइक पहली चीज जो मैटर करती है दैट इज लेट देम स्पीक. सो वो किसी भी वे में हो सकता है. लाइक इट कुड बी जस्ट जैसे हम ये क्लास वो कर रहे हैं, अरेंज की हुई है, या वो पॉडकास्ट के जरिए हो सकता है, या फिर वो लाइव इंस्टाग्राम सेशंस हो सकते हैं, एनीथिंग. बट फर्स्ट लेट देम टॉक कि वो सफर किन चीजों से करें. बिकॉज क्या होता है कि जितना मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है अब तक क्लाइंट एंड पेशेंट्स को डील करते हुए इन क्लिनिक और इन हॉस्पिटल और ऑनलाइन,
सबसे पहली चीज जो वो डिमांड करते हैं या जिस चीज के साथ वो आते हैं वो यही कहते हैं कि उनको सुना नहीं जाता है। सो आई वुड लाइक कि इस चीज को पहले फोकस किया जाए कि हम उनको सुने, और हम ये इस वजह से ना सुने टू आंसर देम, बट वी लिसन देम टू अंडरस्टैंड। सो इट वाज just a little bit I wanted to share. Yes, Hanji. Yes, Miss Hina. Thank you. And Zurini ke when the patient wants to talk, तो जरूरी नहीं है कि हम उनको सुने या उनको understand करें. Sometimes they just need to let their ideas out into the world. Sometimes they just want to let their feelings out. So yes, it's excellent. Okay, thank you. Let's move to Miss Maham Kashif. Would you like to add something, please? अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? Walaikum salam. Yes, we can hear you. Okay, I am a final year medical student. I am doing MBBS. This was my short intro, and I just want to say कि basically होता ये कि जो mental illnesses होती हैं उनकी कुछ ग्रेड्स होते हैं, कुछ माइल्ड, कुछ मॉडरेट होती हैं, कुछ सीवियर होती हैं। तो लोग ये तो कहते हैं कि मेंटल इलनेस या मेंटल अवेयरनेस के बारे में हम उसको पब्लिकली मतलब कि उनको लोगों को नॉलेज दें, लेकिन होता ये कि नॉलेज देना और बात होती है, और जब तक एक आम बंदे को यही नहीं पता होगा कि जो इलनेस है उसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, तो वो आपके अगर फर्स्ट कहीं फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं या आपके कोलीग्स हैं, जहाँ पे भी आप रहते हैं, जिनके साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, अगर उनको यही नहीं पता होगा कि कोई मेंटल इलनेस अगर होती है तो उसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, जो हम किसी दूसरे पर्सन में देख के आइडिया लगाते हैं कि यार इसको कोई इलनेस है और इसको हमें सपोर्ट करनी चाहिए, जब तक हम वो ही नहीं देखेंगे तो होता ये असल में कि बहुत सी डिसीज होती हैं जो कि माइनर लेवल पे, जब वो माइल्ड होती है ना तो वो बहुत इजीली ट्रीट हो जाती है। होता ये कि माइल्ड वो डिसीज होती है, फिर वो मॉडरेट के लेवल पे आ जाती है, फिर वो सीवियर के लेवल पे जब आती है, फिर जो है ना आपके फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, कोलीग्स, फ्रेंड्स, वो सब जो है ना ध्यान देना स्टार्ट करते हैं। तो होना ये चाहिए कि जब कोई डिसीज माइल्ड लेवल पे है ना, तो लोगों में इतनी अवेयरनेस हो कि वो उसको उस टाइम पे डिटेक्ट कर सके उनको, क्योंकि कहते तो है मेंटल इलनेस का अवेयरनेस होनी चाहिए, लेकिन अवेयरनेस से खाली फर्क नहीं पड़ता। अवेयरनेस तो है, लेकिन असल बात है कि पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज्यादा कॉमन है कि लोग किसी दूसरे पर्सन को देख के आइडिया नहीं लगाते कि इसको कोई इलनेस है। वो माइल्ड लेवल पे जब होती है, जब मॉडरेट लेवल पे होती है, इसकी बहुत सी मिसालें हैं। जैसे फर्स्ट करें, अगर किसी को सीजोफ्रेनिया है तो वो माइल्ड मॉडरेट लेवल पे लोग इतनी इजीली आइडेंटिफाई नहीं करते। बाइपोलर है उसको भी नहीं करते, डिप्रेशन होता है इसको तो बिल्कुल ही नहीं करते। इस तरह और भी डिसीज हैं जो बहुत मेंटल इलनेसेस की। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि लोगों को अवेयरनेस जब हम दें तो हम उनको इतनी अवेयरनेस दें कि उनको एटलीस्ट डिसीज के साइंस एंड सिम्टम्स का पता हो, खाली डिसीज के बारे में ना पता हो, उनकी साइंस, और वो इतने कैपेबल हो कि उनको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कर सके। क्योंकि हम एज अ साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स जो हैं वो इतना अच्छा नहीं कर सकते। हम तो तभी किसी पेशेंट से डील करेंगे ना जब वो हमारे पास आएगा या हमें हमारे से आके कंसल्ट करे। लेकिन जो आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं, आपके रिलेटिव्स होते हैं, आपके कोलीग्स होते हैं, वो आपके साथ 24/7 रहते हैं। वो आपको ज्यादा जल्दी आपकी जो है ना आपके बिहेवियर में चेंजेस को ज्यादा जल्दी नोट कर लेते हैं। तो वो आपकी जो डिसीज अगर कोई माइनर लेवल पे है ना तो उसको जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं और आपको जल्दी जो है ना सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए लोगों में अवेयरनेस जो है ना वो स्प्रेड करना जरूरी है, इतनी अवेयरनेस हो कि वो मॉलिक्यूलर लेवल तक जाए। मैं बस यही कहना चाहूंगी। Yes, thank you, Ms. Maham. Yes, it's very important, especially to label and diagnose the illness, as well as not to stigmatize it. तो हमने इतनी लेबल नहीं करना, इतना मिसलेबल नहीं करना, और इतना डायग्नोज नहीं करना कि वो स्टिग्मेटाइज हो जाए. So there's a very fine line between those things. Excuse me. Let's move on to Miss Maliha Durrani. We have a lot of ladies here, not that many men. Oh my God. Okay, well that's a good sign. Miss Maliha Durrani, would you like to add something? Yes. Okay, Assalamu alaikum. Walaikum salam. Walaikum Amazan. assalam. Okay, so I am a BS psychology student, and currently I am in final semester, and I am a resident of Quetta, and I am doing my bachelor's in psychology from Quetta as well. Okay, so the reason I joined this group is
मेंटल हेल्थ अवेयरनेस से मुझे लगता है कि साइंस और सिम्टम्स हो गए, और ये जो जितने आप लोग टॉपिक्स आ रहे कि चाइल्ड मेंटल हेल्थ हो या पेरेंट्स के अवेयरनेस हम मेंटल हेल्थ की दे दे, तो उससे पहले हम ये चीज़ भी उनको बताएं कि जो कोई भी मेंटल इलनेस अगर किसी को हो, सो इट शुडंट बी हिडन। क्योंकि यहाँ पे अक्सर इसी तरह होता है कि जैसे फिजिकल इलनेस किसी को होता है तो वो कंफर्टेबली अगर किसी को बता भी देते हैं कि ये फिजिकल प्रॉब्लम है, बट मेंटल अगर इलनेस किसी को होती है तो वो यहाँ इवन कोई वो चीज़ खुल के बता भी नहीं सकता कि आई एम फीलिंग दिस, और अगर वो उसको होती भी है तो वो बाकी रिलेटिव से वो चीज़ हाइड करने की कोशिश करते हैं, और इट इज थॉट टू बी लाइक समथिंग बैड और दैट शुड बी हिडन। आई थिंक इस हवाले से मुझे लगता है कि हम ज़्यादा लोगों को अवेयर करें कि mental illness is not something to be hidden, it's not something to be feel bad। तो फिजिकल इलनेस की तरह मेंटल इलनेस भी नॉर्मल है, सो इट शुडंट बी इस पर्सन को शेम फील कराए कि आप थेरेपी ले रहे हो या इस तरह सेशंस ले रहे हो, क्योंकि वो जो उस इलनेस से मेंटल हेल्थ इलनेस से गुजर भी रहा होता है तो उसको भी वो अगर बोल भी नहीं रहा होता, ही इज नॉट स्पीकिंग, इट्स बिकॉज क्योंकि उसको भी ये फील हो रहा होता है, उसको भी ये कंडीशन उसके अंदर हुआ होता है कि आई थिंक इट इज समथिंग बैड कि अगर मैं ये चीज मेंटल इलनेस से रिलेटेड किसी को बताऊं तो उसको भी लगता है कि शेम फील होता है एंड ही फील्स बैड, और इसी वजह से आई थिंक वो बोल भी नहीं पाता वो बंदा। तो सो आई थिंक वी शुड कंसिडर दिस पॉइंट, एंड सेकेंडली फिर स्पेशली बलूचिस्तान के हवाले से आई थिंक यहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लैक ऑफ अवेयरनेस मेंटल हेल्थ की बहुत ज़्यादा है, और उसकी रीज़न ये भी है कि यहाँ पे उस तरह के सच कैंपेन्स और ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो गए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पे नहीं है अवेलेबल। तो एज कम्पेयर टू बाकी प्रोविंसेस यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ लैक कर रही है। सो दैट्स व्हाई आई जॉइन्ड दिस ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ बलूचिस्तान में भी, कोयटा में भी जो है कैंपेन्स हों, सेशंस हों मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, जिसमें चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, ताकि ये चीज़ यहाँ वाइडली स्प्रेड हो, सबको ये अवेयरनेस हो। तो जैसे ये कैंपेन्स इधर भी होनी चाहिए। तो Thank you, Miss this is Maliha. the Yes, all I want to say. absolutely. Absolutely. Balochistan does seem to get cut from most of the talk and most of the things related to the rest of the provinces of Pakistan. So thank you. Thank you for pointing that out, and thank you for being part of self-awareness group. Is there anyone else who would like to add something? Because I unfortunately did not upgrade to our package, so we might get disconnected in 6 to 7 minutes. So please join into the next one. I will send the invite link on the chat if we get disconnected, so you can connect back into that. Mr. Bilal, would you like to add something? ओके इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने आप सबकी बातें सुनी और मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रियली द सेम, लाइक अवेयरनेस होनी चाहिए पाकिस्तान में। द प्रॉब्लम लाइज इज अवेयरनेस की बात हम सब कर रहे हैं और कर रहे होते हैं, अनफॉर्चुनेटली एक्सेप्टेंस नहीं होती उस चीज़ की। आई माई सेल्फ बीन डायग्नोज्ड विद डिप्रेशन सिंस लास्ट 5 years, or I can truly understand the issues that I have to face and the feelings, how one has to suppress the feelings, how they are not willing to express their feelings. There are times when you do not have an option to share your struggle with your families, your friends, and you have to leave your friends as well. The point is, all the issues that I have highlighted earlier were my first-hand experience with this mental health struggle, and I'm still under treatment with some psychiatrist I'm looking to forward to. But the point is, अब अवेयरनेस से आगे चल के हमें प्रैक्टिकली कुछ करना चाहिए। आई मीन द सेशंस हम लोगों ने जब स्टार्ट किए थे तो इट इज़ वेरी इजी कि हम आधे घंटे घंटे में लोगों को बताएं, अपनी बात को, मैसेज को कन्वे करें। बट द पॉइंट इज कि एक हम बोलने वाला होगा और 20 लोग सुनने वाले होंगे। हम इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए,
कि हम 20 लोगों को सुने ताकि उस 20 लोगों की जो बात हो उससे कुछ एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट आए, और 20 के जरिए एटलीस्ट कम से कम हाफ ऑफ देम शुड बी एबल टू रिजॉल्व एनी इश्यूज दे आर पर्सनली फीलिंग. सो अगर 20 लोग बात करेंगे तो सुनने वाले भी ज्यादा होंगे और उनके जो इश्यूज हैं वो भी ज्यादा सॉर्ट आउट हो जाएंगे. सेकेंडली, ऑन ग्राउंड इस चीज की बहुत जरूरत है. इनिशियली कपल ऑफ वीक्स बैक हमारा बिल्कुल ये आइडिया नहीं था कि हम स्टूडेंट्स को टारगेट करें. व्हाट वी वर प्लानिंग इज टू reach out to the middle class and the poor people in our society, ताकि because one of the issue I've realized recently is a middle class or anyone who can afford this mental health facility, it seems to be like a luxury one can have. It's not easy for everyone to afford this treatment. Now the point is, we one of the long-term mission that I can foresee this is I would like to see that there should be very much clinics available in every city, every town, where people and any person can go and seek treatment from the clinic. सो अभी तो हमारे पास रीचेबिलिटी का भी इशू है, अवेयरनेस का इशू है ही है, लोगों को रिस्पॉन्स कैसे करना है, ऐसे लोगों को ट्रीट कैसे करना है, उसकी एक्नॉलेजमेंट भी बहुत भी लैक कर रही है. और जहाँ तक बात रही स्टूडेंट्स की, अभी रिसेंटली हम लोगों ने वी हैड अ मीटिंग विद सम स्कूल्स एज वेल. तो उसमें हमें रियलाइज हुआ कि जो इनिशियल स्कूलिंग का जो टाइम है दैट हैज बीन अ लॉट ऑफ मेस फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर पेरेंट्स. I mean, the main core issue that is being saw down in the soil is from there, from schools. लोगों बच्चों की अपब्रिंगिंग में इतना इश्यूज आ रहे हैं, उनकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो रही. पेरेंट्स की तरफ से इश्यूज आ रहे हैं, अपब्रिंगिंग के मसले हैं. आई मीन, आप जो एरिया ओपन करके देख लें, देयर इज लॉट ऑफ वर्क दैट हैज टू बी डन. Right now this concept of mental health is just like a fashion as well, but if we dig in to this topic, यहाँ पे बहुत ज्यादा काम होने वाला है. और I'm not sure I would be able to do this in my life, but I would like to at least initiate a platform where everyone can own this process, where every can be take ownership of this process, कि वो at least अपने end इंडिविजुअली इस चीज को आगे लेके चलें, और अब दूसरों को भी अब नॉलेज दें, अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करें, बट ट्राई टू लिसन टू देम. बिकॉज जो प्लेटफॉर्म का एक मकसद हमारा ये भी है कि वी हैव प्रोवाइडेड दिस प्लेटफॉर्म जहां लोग अपनी बातें शेयर करें. इन पास्ट 4 to 5 वीक्स उसमें हमारे पास बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सेज आए हैं लोगों के, और they just wanted to be listened. They didn't expect me to respond to them. They didn't ask me to recommend me any psychologist, any professional, but they want me to just listen and to grab it. So that was all about it. The purpose of this orientation is one more thing is that I want you guys to do individually. Okay, that was all about from my side. What I was saying is that आप लोग सब अपने end से अपने social circle में, if you think something needs to be done, let us know. We will improvise on it. We will do all the process streamlining on that one. We will prepare some documentation on that, and we will try to execute in your regions like in Karachi, Islamabad, Pindi, Lahore, Quetta as well. So we do not have anything to have a laid back attitude. We are 100% actively pursuing this project. So anything that needs to be done, just let us know. We will get it executed. So I guess Amar, there are more few people that need to introduce, and they have to say something. Okay. We have Miss Rabia Akhtar, Saman Rizwan, Tayyiba Ali. We have Mr. Zubair, of course. Then we'll have to go circle back around to the A section because we have Miss Adiba. She joined in. Miss Asma Aslam, and someone from GCU, I'm suppose. Let's start off with Miss Rabia Akhtar. Welcome. Can you hear me? Yes, perfectly. Okay, let me introduce. My name is Rabia Akhtar. I'm from Karachi.
Basically, I'm a content writer, freelance content writer. What everyone has said, of course, I agree completely. What I would like to add is, देखिए जब ये नेगेटिव थॉट्स आ रही होती तो सबसे पहले तो हम उसको ये भी नहीं कह सकते कि आपको डॉक्टर की ज़रूरत है या उसे हम कुछ स्टेप से कहेंगे तो वो इसलिए थोड़ा सा और डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम सबसे पहले तो उसको हम कुछ ऐसा करें कि वो खुद से ही अपने लिए कुछ हीलिंग का प्रोसेस हो सके। तो व्हाट आई वुड लाइक इज मेडिटेशन और पावर ऑफ कंसंट्रेशन, इस टाइप की प्रैक्टिसेस करवाना या इसकी अवेयरनेस करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि एक इंसान खुद से ही पहले उस नेगेटिव थॉट्स को रिड्यूस करे या रिमूव करे और फिर वो इस बात को समझेगा। Okay, thank you, Miss Rabia. Would you like to add something, Miss Saman? जी अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. जी सर ऐसा Hello, I'm sorry. I think I accidentally muted someone. या I apologize. नो इट्स ओके। तो सर मैं कही थी कि जो इशू है ये फॉर रियल है, वाकई में रियल है हमारी सोसाइटी में। बहुत सारे पॉइंट्स जो मैं यहाँ मेंशन करना चाह रही थी वो ऑलरेडी डिस्कस हो गए हैं। तो अब बस एक बात है कि हमें इस तरह का कोई वे आउट चूज करना चाहिए अवेयरनेस में कि उनको बुरा भी ना लगे, जो कि पेशेंट, बल्कि पेशेंट वर्ड मुझे नहीं यूज करना चाहिए, जो भी इसमें से इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं या जो फील कर रहे हैं उनको एक्सेप्टेंस वो कर सकें अपनी इस इशू के बारे में और उनको बुरा भी ना लगे। अगर हम किसी को जाके बताते हैं ना कि आपकी बिहेवियर में कुछ चेंज आ रहा है या आपका कोई लग रहा है कि कोई इशू है, तो वो उसको माइंड कर सकते हैं। तो हमें कुछ इनडायरेक्ट अप्रोचेस यूज करनी चाहिए, मतलब डायरेक्ट की बजाय इनडायरेक्ट, जो कि इम्पैक्टफुल भी हों और ऑफ कोर्स उनको बुरा ना लग सके इस बात का। ये बात एक मैं ऐड करना चाहूंगी। और दूसरा ये कि यस ऑफ कोर्स चिल्ड्रन को, जो हमारी सोसाइटी में जो स्कूल्स में बच्चे हैं उनको अप्रोच करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर हम उनको एक सिस्टमैटिक वे में अप्रोच करते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर हम स्कूल्स में जाते हैं तो थ्रू अ प्रॉपर चैनल हम हेड टीचर्स को या प्रिंसिपल्स को इन्वॉल्व करके और टीचर्स को प्रॉपर एक थोड़ा सेशन दे के कुछ ट्रेन करके फिर बच्चों तक पहुंचते हैं, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है। क्योंकि बच्चे कभी भी स्कूल लेवल के जो छोटे बच्चे होते हैं वो कभी भी बाहर से जो भी टीम आएगी या जो भी एक नया बंदा आएगा उसको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकते जिस तरह कि अगर उनकी अपना जो स्टाफ है या उनके टीचर्स हैं जो डेली बेसिस में उनके साथ इंगेज रहते हैं, उनकी बात को जितनी अच्छी तरह से समझ पाते हैं। तो अगर हम बच्चों को टारगेट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि उससे पहले उनके टीचर्स को और स्कूल्स को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। तो लेट्स होप कि हम कुछ इम्पैक्टफुल इस सोसाइटी में कुछ अपना प्ले रोल कर सकें। थैंक यू सो मच। Yes, excellent. Thank you, Miss Saman. Very duly noted that not only do we need to talk to the children, but also their teachers as well, so they know what to teach. Thank you. Next one, Miss Tayyiba Ali. Would you like to add something? No, nothing special. That's fine. That's fine. Thank you, Miss Tayyiba Ali. Mr. Zubair, why are there so many women here and why only a few men? And is this more of a female domain, or should there be more men here too? Assalamu alaikum, everybody. Thank you very much for having me. And well, easy question to answer, Amar Bhai. Statistically, around the world, women have a tendency to enter this field more than men. If you look at the world, where even in the most freest countries that you have, Scandinavian countries, for example, Sweden, Norway, Finland, वगैरह, अक्सर जो caring roles की तरफ जो ज़्यादा staff जो होते हैं वो women ही होते हैं. Because women, I'm not sure, my opinion is because women have a lot more compassion than men do, I think. But that doesn't mean that men are incapable of compassion. But ये बात करते हुए, this means more about the European side of the world. हमारे साथ तो ये है कि we are a patriarchal society, or patriarchal society से ये मुराद ये है कि we are okay, sorry, I thought you couldn't hear me. चलो, हमारी society में ये तो एक मसला है कि we do suffer from toxic masculinity, and that is why generally तौर पर मर्द नहीं रोते जो ना, ये वजह जो सोच है, this is still in our blood up and down the country, and we have to challenge that. So I want to start off with this now. We're all saying the same things. I'd like to add a few different things if you don't mind.
There's a story of Musa alayhi salam's time. मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक ऐसे ही था बंदा. He was a believer in Allah. और वो क्या कहता रहता था? He used to every day say, "Hey Allah Ta'ala, I love you so much. If you had shoes, I would clean them. If you had clothes, I would stitch them. I would wash your clothes for you. I would clean your house. यूं फलां वगैरह." So इस बंदा के इतना ज्यादा awareness नहीं था कि अल्लाह ताला है क्या exactly, but he knew he loved Allah Ta'ala. ठीक है? Musa alayhi salam, he came and he heard and he saw this man and he said, ये तो बहुत गलत कर रहे हैं आप. ये तो आपको अल्लाह ताला से माफी मांगना पड़ेगा. Allah Ta'ala will be very upset with you. And the man, he ripped his clothes and he ran off into the desert and we never saw again. And Allah Ta'ala ने मूसा alayhi salam से ये कहा था कि ये आपने गलत किया. This was not for you to do. This man, he may not have had that understanding, but he still loved me. In his own way, he was worshiping me. So all you had to do was be compassionate towards that man. And why I give that story is because we are in this type of society जहां पर दीन को हम अपने आप को convince करते हैं कि दीन is number one, but we use that excuse to hide behind deen कि we are not grateful, we are not patient, how dare we talk about mental health. This is the excuse they use. हालांकि हमारी सोसाइटी, हमारी हिस्ट्री में सबसे पहला ही मजहब है दुनिया में जिन से एक हॉस्पिटल ऐसे बन गया था जिसका नाम है मारिस्तान्स. I'm gonna write the name in the chat. मारिस्तान्स का मकसद यही था ना सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ को बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ को भी देखा जाए. And this was at the turn of the golden age of the Islamic Empire. So we prioritize mental health before any other deen on the planet. This is something we have to be proud of. Now, yes, from what I understand, please correct me if I'm wrong, our approach generally, Torper, we want to go away from only concentrating on the pathological. The reason I say this is because jinko pathological masla masal hote hain, obviously they need a specific regimen. But the vast majority are for suffering from lack of counseling, from lack of talking therapy, from lack of catharsis. मेरे ख्याल से जिसकी वजह से हम सबको ये मसला मसाल होता है. Obviously कुछ लोगों के साथ ये मसला होता है ना. It builds up to such a point where it becomes pathological. लेकिन एक ऐसी मैडम यहाँ पर जिसने कहा था कि this illness is growing. I think it was Dr. Maliha Durrani. She said that the illness grows to such a point that we can't fix it, and we have to try and get over the taboo so that we can treat it like a physical illness and get to it before it gets worse. So listening to people, this is something I think I would say for the students. I know I've only done a couple of masters here, but I'm older than some of the guys here, I think. And just from life experience, you know that you don't need to be a psychologist to know that you just need to listen. You just need to shut up. You just need to listen. This is a skill that, inshallah, if we haven't learned already, then we must learn, and not just learn how to do it, but learn how to teach that skill. So this is something that we need to look into as well. And somebody here mentioned that mental health seems to be like a fashionable thing right now, which is fine, because fitness, health and fitness, ये जो gyms और health centers की जो boom हुई है ना, मिसाल के तौर पर अगर मैं देखा जाऊं, लाहौर में एक क्या से कहते हैं लोकेशन में एक पूरी इलाके में सिर्फ एक या दो gyms होते थे. Now you go to each phase, each block, there's 2 or 3 gyms now, 3 or 4 gyms. Why? Because at first it was fashionable to go to get your physical health checked out, to get yourself lifting weights, go on the treadmill. Fine. If we have to, we capitalize on this. We make it fashionable. We put it in a fancy packet. If you are in an area where you are able to approach a certain body, be it your student body at your university, be it a school, if you package it in such a way that rather than saying, oh, we're going to treat your deficiencies, we're going to treat your illnesses. If we have to get it in their heads, na, ye kafi nahi hai ki you are physically healthy, we want to get you in tip-top condition. We don't even mention this is a suggestion मेरे तरफ से. I mean, it depends. एक बंदे को अपनी location और अपनी situation को देखना ही पड़ेगा individually तौर पर. But if we have to, we can package it in such a way that actually, when you go to these institutes and say, look, your institute, you can market yourself as the best institute because you're not only taking care of the education, but you also are making your students the most mentally strong that they can be. So you're not even mentioning illnesses, because talking about illnesses is taboo, isn't it? But you use that key because that's the truth.
You're trying to get them not just to survive, but to thrive. Thriving is key. And you get your foot into the door by saying कि हाँ हम अपनी students को tip top shape क्या कहते हैं कि opportunity देना चाहते हैं. That is your way in. That way you can equip the teachers to say, we're going to make you these not just teachers, but super teachers. So that is a couple of ideas and suggestions that have come to me whilst I've listened to everyone else's suggestions. But obviously, there's more that can be done, obviously, but that's enough for right now from me. Thank you, Brother Zubair. Okay, we have a request to speak next. Miss Adiba, would you like to continue, add something to that? Assalamu alaikum. I hope you will be fine. I'm Adiba Jabbar from Lahore, and I'm working as a psychologist at a special children's school, Amin Maktab, where we deal with mentally retarded children or suffering from with any kind of disorder, ADHD, and all that. And that school, basically, we're working on the counseling of parents. And part-time, I do teaching at academy. So I realized that we need to counsel the parents and the teacher. If we will do the counseling of the parents and the teachers, so we can improve the mental health of students, and we can make a better society. So in that all the scenario, when I was watching my social media, and I saw the news, 6th class girl do suicide. So I was shocked in that case when I read all the letters and all the regarding material. So I came to know that the reason of the suicide was depression, and the reason behind the depression was false parenting. It was all about comparison between siblings, and even though we do comparison between cousins and all other relatives. So basically we need to counsel the parents and the teachers. If we do that counseling, then we can stop the young suicide rate in society, and we can deal with the depression as well. So we start a campaign, and we start launching free camps. I am going to start launching free camps in my area, in my the area which covers schools and colleges as well. So I need your support and your help to start my campaign. Thank you. Definitely. I think only Mr. Bilal can follow up with that request. Bilal, would you like to add something? Yes, we already spoke regarding that, and we are still working with a couple of schools. We are trying to plan some process and some proposal for the schools where we can counsel the teachers and parents. And first, we're going to counsel the teachers, and then in the second phase, we are going to counsel the parents. So this is still under the proposal stage. So we are working on it. So hopefully we're gonna done it in coming. Okay, Omar, someone has asked a question. Why do we blame parents? Yes, that was asked by Miss Maya. Who would like to answer this? May I? Zubair has left, I guess. Yes, please, Mr. Zubair. Very simple answer, Ms. Maya, because there's so many studies done and so many experience of many psychologists and specialized institutions where instead of just they try to treat just the student themselves, and the issue was not resolved. But when they started working on the parents, then the issue got better for the children as well as for the parents as well. So when we are talking young, prepubescent children, and maybe some arguably in their adolescence, I don't know how many studies, but there's been at least 2 or 3 studies to my knowledge where they decided that actually treating the parents was more effective than just treating the students by themselves. Hopefully that's answered your question. Thank you, Mr. Zubair. Miss Adiba would like to say something. This is an open mic. Everybody, this is open mic. You can talk. The platform here is just so that everyone can talk. You don't have to ask permission.
Okay, thank you, sir. I want to answer the question. I was in fourth semester when I was studying all the parenting style and the parenting education because it was my subject. So I studied in the depth. When you improve your parenting style, your child performance, your child behavior automatically increased. So biggest point of blaming is in Pakistani parents. The biggest point is the comparison between children. The thing that I have faced during my childhood, but with the passage of time, the stigma and the thing is improved in my parents as well as they stop comparing. Firstly, you have to stop compare your child with other child because Allah made everyone unique. So our biggest problem is the comparison between children and the false parenting style. That's it. So that's why we blame the parents because when a 6-year-old girl who is totally dependent on parents emotionally and economically, so when she commits suicide, so definitely we have to blame the society because parents are also considered as friends. So parents should prop in and should investigate what's happening with your child, and parents should listen them. If they won't be a friend of their child, then definitely they will suffer with mental illness, and result can be devastating. Thanks. अस्सलाम वालेकुम. Walaikum salam. Yes, Ms. Taiba. यस मैं ये कहना चाहूंगी मैंने यानी जब ये वाकया हुआ था 6 साल का तो एक यानी किसी ने कहा था कि हम यानी पहले ज़माने में मुझे जो ऐसा लगता है ना जो यानी हमारे माँ-बाप का यानी पिछली जनरेशन का जो ज़माना था उस वक़्त इस तरह की अवेयरनेस बहुत कम होती थी। अब बनी है ऑर्गेनाइज़ेशंस उमंग टाइप ये जिस तरह मुझे आप लोगों की जैसे मिली है SAG, SAG तो हम पेरेंट्स को भी ब्लेम कर रहे हैं लेकिन वजह ये है कि उस ज़माने में ना कोई वो नहीं थी, जो यानी कह दिया ना बस बड़ों ने तो हम यानी एक तो वो चीज़ आती है कहना मानना, लेकिन एक होता है कि यानी पेरेंट्स भी थोड़ा-सा करते थे लेकिन हम लोग यानी ब्लेम करने के बजाय उस वक़्त ये भी कह सकते हैं कि अवेयरनेस नहीं थी उस ज़माने में और फिर वो जो चीज़ फिर अगली जो जनरेशन को करना पड़ा ना, वो फिर उदासी उनमें और ज़्यादा आ गई और यही कंपेयरिंग वगैरह क्योंकि हम मैंने अपने ख़ानदान में भी देखी है कंपेयरिंग होती थी। और मैं दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगी कि हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए। एक तो ये कंपेयरिंग का भी हो गया और ब्लेम वैसे भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपके घर में साइकोलॉजी यानी किसी को है प्रॉब्लम इस चीज़ की, उसको थोड़ी-सी है इसकी यानी थोड़ा-सा सफ़र कर रहा है वो अपनी यानी जो भी हम इसे कहेंगे, तो मेंटली तौर पे सफ़र कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें जो उसके साथ जो होता है ना, उसको भी ब्लेम नहीं करना चाहिए कि तुम कैसा ट्रीट कर रहे हो क्योंकि वो बहुत स्ट्रांगली यानी उस बंदे के साथ निभा रहा होता है और हम लोग कहते हैं कि तुम उसकी देखभाल नहीं कर पाते, वो इस चीज़ से सफ़र कर रहा है। तो ये भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी। क्योंकि जो उसके साथ रह रहा होता है ना, जो मेंटली सफ़र कर रहा होता है, वो भी यानी देख रहा होता है उसे। Excellent. Anji, actually, the thing is, we also on the opposite hand, we also tend to blame everything, all our situation on our parents, which is also incorrect. When we have the capability to change, and it takes just one generation to change, from politics all the way down to home politics. So as long as we are aware that yes, things need to change, something is broken, we can fix it. And it just takes this one generation to change the entire scenario of the society. So yes, I think we're doing a good job. Would anyone else like to add something? Assalamu alaikum. This is Maya from Balochistan. मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये था कि मतलब कि मुझे क्यों लगता है कि इन दी एंड ये सब कुछ मतलब पैसे पे आ जाता है कि अगर पापा के पास पैसे होते तो आज ये प्रॉब्लम नहीं होती, पापा के साथ पैसे होते तो आज वो, अगर मेरे पापा अमीर होते या उनकी जायदाद होती तो मुझे ये सारा सफ़र नहीं करना पड़ता। फिर उसके बाद ये होता है कि भाई लड़कों को अच्छे स्कूल में पढ़ा लिया, बिकन हाउस में पढ़ा लिया, हमें नहीं पढ़ाया, चलो ओके हमने ग्रेड्स तो अच्छे लिए उनसे, फिर उन्होंने उसको भी कंटिन्यू नहीं किया। फिर उसके बाद पापा से बस मैं ये कह रही हूँ कि पापा ने तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं अपने बच्चों को या नॉर्मल दूं, उन्होंने कहा सबसे बेस्ट दूं,
जब बेस्ट दिया तो फिर उसके बाद फिर भाई आ जाते हैं, उनको लड़की पसंद आ जाती है और दे सेड कि बस कल को कल उनकी मंगनी करवा दो, क्योंकि फिर उसके बाद उसकी कहीं और हो जाएगी। चलो वो भी सर पे ले लिया। फिर उसके बाद उनकी जॉब नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई लड़की की बस शादी हो रही है, आप ले जाओ, 2 जोड़े में ले जाओ, लेकिन वो 2 जोड़े नहीं होते, वो पूरा एक प्रॉपर शादी होती है। मतलब इन द एंड ये सब कुछ, मतलब पापा ने पूरा तक नहीं किया, पैसे नहीं है, तो ये डिप्रेशन एंजाइटी ये इसीलिए आ रहा है। तो एक मेन टॉपिक फिर यही हो गया कि पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर हमें ये कहते हैं कि नाशुक्री ना करो। सर मुझे ये सब समझ नहीं आता। Wow, explosive question. Who's going to dare to answer this? I would like to answer. Okay, Miss Maya have asked a question regarding blaming. So I would say मैं दूसरे questions की तरफ भी आती हूँ. So first I would like to say कि it is more of a subjective experience. Suppose before a child get to know the game of comparison, or before they got to know कि comparison होती क्या है, कैसे इसका impact क्या है, cause क्या है and all, उससे पहले होती हैं attachment styles. Like when a child is born, तो infinity stage से लेकर infinity, childhood, adulthood, teenage, all these stages, इन सारी stages में attachment style बहुत ज़्यादा matter करता है. जैसे I guess Miss Adiba added, तो there are different attachment styles. I would not go in much details, but मैं थोड़ा सा share करना चाहूँगी. जैसे there are different attachment styles. One is a secure attachment style, avoidant attachment style, anxious attachment style, and the one is disorganized attachment style. So I think Miss Hina accidentally hit the mute button, but she was saying something very important. Goro ने ये बड़ा अच्छा काम किया कि they labeled everything, and this is one of the ways to resolve problems, is to label the problem and then to study it and then to find solutions for it. So yes, this is an excellent way. Attachment styles. Wow. Mind blown. Yes, absolutely. I think this is one of the causes. Anyone else would so like to sorry. add? She's back. Oh, She's okay. back. She's back. Okay. So sorry, I accidentally muted it. Okay, so I was saying कि different attachment styles होती है. So जब बच्चा उन styles के साथ बड़ा होता है, तो उसी के हिसाब से उनके thoughts, emotions, feelings काम करते हैं. Suppose if a child is grown in a secure attachment style, वो बच्चा जो है कभी blaming नहीं करेगा, वो बच्चा confident होगा, वो बच्चा long term relationship बनाएगा, वो बच्चा support और लोगों को देगा भी, और parent और बाकी लोगों के जो support को है उनको understand भी करेगा. So it is all that. So एंड पे वही बात आ जाती है कि अगर एक बच्ची की जो तरबियत है वो स्टार्ट से ही सिक्योर रही है, एंड द चाइल्ड इज नॉट वल्नरेबल, द चाइल्ड इज हैविंग गुड एक्सपीरियंसेस, तो इसके साथ साथ उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस भी डेवलप होती है. सो इमोशनल इंटेलिजेंट अटैचमेंट्स, ये सारी चीजें काम करती है इंसान के कॉन्शियस अनकॉन्शियस इन सारी स्टेट्स पे. सो एट द एंड वी हैव अ पर्सनैलिटी जो कि सोसाइटी में या फिर पर्सनल रिलेशनशिप में इनमें जो है ग्रो करती है. सो आई वुड लाइक टू से अगेन, इट इज अ सब्जेक्टिव पार्ट, सब्जेक्टिव थिंग. वन कैन बी इमोशनली इंटेलिजेंट at teenage, and one can gain that emotional intelligence at adulthood. इसके साथ ही कोई बच्चा जो है वो शुरू से हम कहते हैं समझदार और सुलझा हुआ बच्चा है. सो दैट काइंड ऑफ थिंग. आई होप सो मिस माया को आंसर मिल गए हो. बाकी जो उन्होंने शेयर की रिगार्डिंग कंपैरिजन एंड ऑल, दैट इज अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन, लेकिन एट द एंड यही चीज मैटर करती है कि आपके पास क्लैरिटी हो, आपके पास क्लैरिटी हो आपके रिलेशनशिप्स की, आपकी इंडिविजुअलिटी की, सो दैट यू डील योर सेल्फ वेल एंड ऑल्सो योर रिलेशनशिप्स.
Yes, I would also like to add something that not only हम सिर्फ बच्चों को कंपेयर नहीं करते बल्कि हम बच्चों को कभी-कभी बहुत ज्यादा पैम्पर भी कर देते हैं and pampering those children also leads to bad people in the society. So and they're used to this pampering, and when they go out into the real life, um, stuff happens, and they fall into a spiral where they were initially being pampered, and now maybe the parent is not here, or maybe he's not used to um, the harshness of life, which is also one of the reasons that they fall into this spiral of depression. Guys, I think if we get disconnected again, I shared the link for the next meeting because I think we got ourselves going. Who would like to add anything else? मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी. Yes, go ahead, please. मैं कह रही थी कि मैंने बहुत पहले यानी मेरी एक साइकोलॉजिस्ट थी तो उनसे मैं वैसे काउंसलिंग लेती थी और लेनी भी चाहिए हर एक को. मैं ये कहना चाह रही थी कि मैंने ली थी तो वो कही थी कि आपको पता होना चाहिए आपके इमोशंस आप क्या थिंकिंग प्रोसेस आपका क्या चल रहा है. यानी आपको अवेयर होनी चाहिए आपको ये गुस्सा आ रहा है या आपको वो आ रहा है और किस बात पे आ रहा है वो यानी पता होना चाहिए ताकि आप उसको क्लैरिफाई कर दो लोगों के सामने. और दूसरी चीज ये है कि हमें यानी जब हमारा गोल होता है ना ये मैंने देखा है ये मेरे एक कजन है तो वो थोड़ा सा इस तरफ ड्रग्स की तरफ या उस तरफ चले गए थे तो वो जब बंदे का मुझे जो लगता है ना कि जब बंदे का गोल नहीं होता ना तो वो थोड़ा सा ना उन चीजों पे भी पड़ जाता है जो उसके लिए सही नहीं होती. Excellent. Excuse me, may I just interject in the conversation if you don't mind? Go ahead, please. Sorry to say this. I think, to my knowledge, this is the first time we're having this is the first time I'm being part of a get together like this, and we're all here together now, and we're trying to make a plan as to what to go forward. I think perhaps we should have a conversation regarding the logistics about how to create awareness in our public sphere as well. I mean, for example, Bilal and myself, Bilal has already got in touch with the school, for example, at least a few institutions to my knowledge. I was only with him with one school. If we can start perhaps brainstorming ideas of perhaps if we know which cities we're in, if we're in our respective cities, we can talk about a get together in our respective cities. Or if we're by ourselves, then at least we can try and offer some assistance and some guidance on how we could try and get the ball rolling in their ground in their respective cities. So we can start logistically, we should probably take some discussion as to how we can get this knowledge that we discuss out into the public sphere as well. We have social media covered. We have the website covered. We've touched a few more institutions. Is there any other practical steps that we can think of that would probably be suitable here? Any suggestions? Assalamu alaikum. I'm Asma from Islamabad. Welcome, Miss Asma. Can you hear me? Yes, we can hear you, please. Basically, I work in a school college where I provide counseling to the students and parents as well. So my point is, if we target the college population, basically 9th and first year, second year, then we can, I guess, initiate our goal because these are the students that are much in need of psychological or counseling. So I guess targeting schools, especially these categories, would be much helpful. Excellent. Yes. Lekin, the thing is, we also need to make sure that this is accessible to everyone, not just students, not just parents, not just political activists, not just teachers, not just therapists, but everyone. Bilal, would you like to add something? So can I say something? Yes, go ahead, Ms. Harim. The बात जितनी भी हमारी discussion हुई है, the point is if we can shift our parents to smart parenting. Everything is smart today in our homes, but the thing is missing is smart parenting is missing. We're still parenting on the
पैटर्न ऑफ 1980. SAG कैन हेल्प. जैसे हम बात करें ना, बच्चों में क्वेश्चन आ रहा है, बच्चों में स्ट्रेस आ रहा है, कंपैरिजन आ रहा है, तो अगर हम थोड़ा थोड़ा टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करें और स्कूल लेवल पे अगर हम इस चीज़ को इनिशिएट करें, हमारे पास एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट हो जो कि वो विजिट करें और वो एक प्लान दें कि अगर आप ये काम करेंगे तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. मतलब 9th-10th के लेवल पे तो हमारे पास प्रॉब्लम आई जा रही है, हम उसके लिए सोल्यूशन दे रहे हैं, लेकिन अगर हम स्कूल लेवल पे इस चीज़ के ऊपर काम करें तो आई थिंक वी कैन क्रिएट पॉजिटिव सोल्स के मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम है वो उस वक्त तक हम डील कर लेंगे. जब बच्चा स्कूल से पास आउट होता है तब तक वो इतना पॉजिटिव हो चुका होगा थ्रू सम हेल्प ऑफ साइकोलॉजिस्ट, ट्रेन साइकोलॉजिस्ट, कि हम प्रॉब्लम को मिनिमाइज कर लेंगे यूनिवर्सिटी लेवल तक, कॉलेज लेवल. Excellent. Mr. Zubair, would you like to wrap up? I think you have a comment. Yes, thank you. Amar Saba, you raised the point that we want to make this awareness campaign popular throughout the entire population, Yannick. We want to give this information out there. But I think we don't want to spread our resources too thin. So we have to try and take this approach kind of like almost a campaign approach, a business campaign approach, a marketing campaign approach. Because Fi Nafsi, what are we trying to do? We are trying to create awareness. What is that? That in essence is a marketing campaign. Now, agar Amazon.com ke baat ki jaye, Amazon everybody knows about. What they started with about 30 odd years ago was only with books. They only started with books. मुझे अच्छी तरह याद है, मैं UK में जब था तो TV पर चलता रहता था ऐसी ads. It was an adorable ad. It was about books and the importance of books and how they'd send books bus. But the target of Mr. Bezos was not just books. He wanted to get it to a level where he's at now. So we don't spread ourselves too thin. If we check maybe one or two specialty areas, the vast majority of people here are saying schools and education institutions. Because they have experience in that field, that has to be one of our first approaches, schools and colleges and how we can approach them. Some of you, like Madam Asma said, are already in educational institution. That gives us a foot in the door. She has that opportunity. She could approach other educational institutions to say, look, this is a package. You don't even have to charge for it. It's going to make your institute look good. So if you can advertise it that you're doing something that other institutes are doing, etc., and then that's a foot in the door for the next generation. And then perhaps on another angle, we could look at perhaps corporations. Just if we do one or two things at a time, and then when they gain traction and gain popularity, and it becomes almost automatic or autonomous, our set up institutions within each parameter, फिर हम आगे जाके कुछ और feasibility देख सकते हैं, हम villages में चले जा सकते हैं, फिर हम political parties को approach कर सकते हैं. But if we just nail down one or two good approaches first, and we get them right, and we get it in such a way that it is automatic for us, then it will spread a lot more easier. Excellent. Yes, I agree. Wonderful. Guys, I think we might disconnect again. And I'm sorry, next time I'll prepare better so that we don't have to keep disconnecting and reconnecting. Bilal, would you like to wrap up, or do we wait? Let's see if anyone else has anything else to add. No, I guess just 1 minute left. But I want to talk about few main topics that we need to consider at an individual level and at a level of society that we are going to approach. Okay, let's all move to the next session, and then we can discuss that and then wrap this up. Thank you, everybody. सर मैं कुछ ऐड करना चाह रही थी इसके अंदर. Yes, go ahead, please. सर जैसा अभी डिस्कस हो रहा था, अभी सर जुबैर भी कह रहे थे कि हम स्कूल से स्टार्ट करते हैं, और जो हमारे पास अभी हैं मेंबर्स जो स्कूल्स में हमारी एंट्री मतलब इजीली हम एंटर हो सकते हैं, हम वहां से स्टार्ट कर देते हैं. फिर हम कुछ जो हमारी है ना चेन स्कूल्स हैं, हम उनको टारगेट करते हैं. लेट्स से बीकन हाउस या सिटी स्कूल या इस तरह की जो चेन स्कूल्स हैं, इस तरह हम एक को टारगेट करके बहुत सारी पॉपुलेशन को कवर कर सकते हैं.
उससे क्या होगा कि एक तो स्कूल्स का एक ग्रीन इमेज डेवलप होगा, मतलब हम उनको कह सकते हैं कि आप अपनी CSRs में इसको ऐड करें या अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें कि हम अपने स्टूडेंट्स के ये काउंसलिंग सेशंस करवाते हैं या अवेयरनेस सेशंस करवाते हैं। इस तरह उनका भी इमेज बिल्ड होगा और हमारी भी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी, मतलब वो कहते हैं ना कि स्प्रेड हो जाएगा हमारा एक मैसेज, या फिर हमारे ग्रुप के बारे में ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड हो जाएगी कि अच्छा हाँ इस तरह का एक ग्रुप है जो कि काम कर रहा है और उनको एंगेज किया जाए। इस तरह हम प्राइवेट स्कूल्स में तो हम एंटर हो जाएंगे, लेकिन मैं सोच रही थी कि जो हमारा मोस्ट डिप्राइव्ड पार्ट ऑफ द सोसाइटी है वो जाता है पब्लिक स्कूल्स में। मतलब आप ये कंसीडर करें कि अगर जरा सी भी कोई फैमिली है जो लोअर मिडिल क्लास से भी बिलोंग करती है या अफोर्ड थोड़ा सा भी कर सकती है, तो वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ही भेजते हैं, चाहे वो छोटा सा स्कूल हो, कोई मतलब सोसाइटी का एक बहुत छोटा सा एक गली के कॉर्नर पे भी स्कूल है तो वो प्राइवेट स्कूल को ही प्रेफर करते हैं। लेकिन जो हमारी सोसाइटी का एक एक ग्रुप है जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता, जो शायद लेबर ग्रुप है या मतलब अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप है, वो हमेशा पब्लिक स्कूल में जाएगा। तो अगर तो हम ज्यादा स्प्रेड करना चाहते हैं अपने मैसेज को, या टारगेट हमारा ज्यादा लेना चाहते हैं पॉपुलेशन का, तो हमें इवेंचुअली पब्लिक स्कूल्स की तरफ मूव करना होगा। और उसके पहले हम ठीक है अपना इमेज बिल्ड करने के लिए प्राइवेट स्कूल्स को टारगेट कर सकते हैं। तो पब्लिक स्कूल्स में जाने के लिए तो हमें थ्रू प्रॉपर चैनल किसी पब्लिक जो पर्सन होगा, स्पोक्स पर्सन, उससे उसके थ्रू हमें एंट्री मिलेगी पब्लिक स्कूल्स में। तो वो चाहे हम सीईओ से जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स होते हैं उनसे एक मीटिंग फिक्स की जा सकती है, उनको बताया जा सकता है कि ऐसा हम करना चाह रहे हैं, या कोई डोनर एजेंसीज अगर हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाए। तो इस तरह से मुझे लगता है कि प्राइवेट स्कूल से स्टार्ट करके इवेंचुअली हमें पब्लिक स्कूल तक जाना चाहिए। हेलो। Yes, you are right, perfectly right. Yes, you're perfectly right. The problem is we are not segregating the target to schools or middle schools or high schools. The point is, if we are targeting schools, then we are targeting the complete education sector. So we will be heading towards that. Now, I would like to highlight, apart from this thing, I would like to tell you guys two important things. The name of this organization, like self-awareness group, the purpose and the belief I would like to highlight here is why we named it as self-awareness, because what I believe is the actual strength and force and ability comes from your inner self. So when we are going to change the society, or we are going to create a buzz in society, we need to be very strong from inside. So this is for everyone, every volunteer as well, and every individual as well. They need to be very strong from their inner self. They need to be very well aware of their own self. So that would help them to take up on society, because once you are strong from the inside, the external factors will not affect you. So that is the reason we have named this as a self-awareness group, because the real change comes within. Second point is, I would like to ask Miss Hina if she's around, or any psychologist or doctor, or if anyone can comment regarding the self stigma. There comes a stage when someone indulges in self stigma. How he can get over this, from the negative attitudes, from the internal shame of his own self. How he can overcome this? If anyone can address this. Do we have any psychologists? Hina, I would like to ask you about self stigma. How one can overcome self stigma, because that is the main hurdle that we have to face in order to develop self awareness about our own self. If you can comment on this, Hina, can. Yes, Mr. Bilal. Yes, I was asking about self stigma. How one can overcome self stigma. Okay. Would you please explain this? Self stigma. Self stigma is something like, when I talk about self awareness, that one has to be very strong from inner self. He must be in full control of his action, thoughts, and emotions. So when one is struggling with mental illness, there comes a time when he has to face self stigma. He start questioning his own thought process.
I Yes. mean, negative thoughts about his own Mm-hmm. self, that he's not being able to get well in society, and he just Mm-hmm. have started having negative thoughts about himself. So how जी. one can overcome this? Okay, I got you. Why I asked you explain this question to me, because at the end ये बात उसी घूम फिर के उस पे आ जाती है कि सेल्फ स्टिग्मा मैं कैसे समझ रही हूँ, मैं वैसे बता रही हूँ अगले बंदे को. सो आई वांटेड टू बी श्योर कि सेल्फ स्टिग्मा व्हाट डू यू फील इनसाइड, कि सेल्फ स्टिग्मा आपके अकॉर्डिंग क्या है आपके लिए. सो बेसिकली दिस इज, आई वुड कॉल इट इनकंसिस्टेंसी. ये सब लोग फील करते हैं, वेदर दे आर हैविंग एनी मेंटल इशू और नॉट, whether they are having depression, anxiety or anything, or whether they are not having any mental burden. ये होता है हर इंसान के साथ. लाइक इफ सपोज आई हैव सम गोल्स, आई हैव टू रीच समवेयर, और मैंने अपना एक फ्रेमवर्क बनाया. लाइक आई पर्सनली डू दिस. मैंने एक गोल्स जो हैं वो सेट किए हुए हैं, एंड आई हैव टू रीच दोज गोल्स. सो उनमें उन तक पहुंचने के लिए जो मैंने एक प्लान बनाया हुआ है कि जो स्टेप्स मैं कवर करूंगी टुवर्ड्स गेनिंग दोज गोल्स, तो उसमें जरूरी नहीं है कि आई ऑलवेज विन, आई लूज, बिकॉज इट इज लाइक यू नो अप एंड डाउन, दैट काइंड ऑफ. कभी भी एक चीज तक पहुंचने के लिए हम स्ट्रेटली हम उस चीज तक नहीं पहुंच सकते हैं. हम सफर को तय करने के लिए हमें वो जो डिफरेंट वे है उस पे ऑब्स्टिकल्स आएंगे और हमने वो कवर करने हैं. तो बेसिकली इट इज इनकंसिस्टेंसी. और ये मेरे साथ भी आई ऑल्सो फेस दिस कि मैं जो हूँ उतना नहीं कर रही हूँ सपोज जितना मुझे करना चाहिए. वाई? बिकॉज मेरी खुद से एक्सपेक्टेशन ज्यादा है. सो वाई इट बिकम नेगेटिव मोर, वो एक लूप बन जाता है, एंजाइटी लूप बन जाता है फॉर दोज हु आर मेंटली वीक और दे फील वीक, दे फील मेंटली वीक. उनके लिए एंजाइटी लूप इजीली बन जाता है. एंड वो इसलिए बनता है बिकॉज इफ आई से, सपोज आई गिव यू एन एग्जांपल, इफ आई से कि मुझे कल शॉपिंग पे जाना है, और मैं जैसे घर से बाहर निकलती हूँ एंड इट स्टार्ट रेनिंग, आई कम बैक होम, दोबारा से मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे ओके कल बारिश थी, मैं आज जाती हूँ शॉपिंग के लिए, मैं आज निकलती हूँ तो दोबारा बारिश हो रही है. सो मैं क्या करती हूँ, आई कंडीशन दीज थिंग्स दैट वेन एवर आई गो आउट, बारिश होती है तो मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इट इज अ बैड लक, और मेरा काम ठीक से नहीं हो रहा है, और ये दुनिया मेरे लिए नहीं है. सो व्हाट आई एम डूइंग, बेसिकली मैं उन नेगेटिव थॉट्स को ज्यादा टाइम दे रही हूँ. सो द मोर आई गिव टाइम टू दीज थॉट्स, ये एंजाइटी लूप बनता है, ये लूप बनता है. और इस लूप को ब्रेक करना है हमें बाय एक्सेप्टिंग रियलिटी. जब हम, और रियलिटी हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे, बाय गिविंग आवर थॉट्स प्रूफ, कि जो मैं सोच रही हूँ उसका प्रूफ मेरे पास क्या है. इफ आई एम थिंकिंग कि जब भी मैं कभी बाहर निकलती हूँ तो बारिश हो रही है, इसका मेरे पास प्रूफ क्या है कि ये जस्ट मेरे साथ ही हो रहा है. तो उन जब हम अपने थॉट्स से रिलेटेड प्रूफ्स कलेक्ट करते हैं, जब हमें प्रूफ्स मिल जाते हैं, सो वी से कि यस इट वाज जस्ट ओवर थिंकिंग. सो ये जो सेल्फ डाउट है, सेल्फ एवेल्युएशन है, दीज आर ऑल थिंकिंग. हम अगर चाहते हैं कि वी आर ऑन ट्रैक, तो जैसे एक पार्टिसिपेंट ने एक और क्वेश्चन भी पूछा था उससे रिलेटेड कि आई एम फॉरगेटिंग द क्वेश्चन. ओके, फॉरगेट अबाउट दैट. लेकिन जब हम एक ट्रैक पे जाते हैं तो हम इनकंसिस्टेंट भी होते हैं, हम डीमोटिवेटेड भी होते हैं, हम सेल्फ एवेल्युएशन भी करते हैं, लेकिन हम उस चीज को जितना टाइम देते हैं हम उस लूप में और जो है फंसते जाते हैं. That's right. Actually, the purpose of this question was like कि ये question हमारे वो जो comparison है उसको भी शायद address कर जाता है, self stigma का. और जो किसी खातून ने पूछा था कि हमारे parents जो upbringing में वो जॉब और उसमें मनी मैटर्स को ले आते हैं, तो उसमें भी आई गेस हम कहीं ना कहीं सेल्फ स्टिग्मेटाइज कर रहे होते हैं हर चीज को. तो उस चीज को ओवरकम करने का एक द बेस्ट सोल्यूशन दैट आई थिंक ऑफ इट इज इंडिविजुअल लेवल पे हम सबको सबसे पहले तो जो मनी मैटर्स हैं उसको सेपरेट करना चाहिए.
और अपनी जो इंटरनल जो आपकी स्ट्रेंथ है, अपने इमोशंस और अपनी जो आपकी इंटेलिजेंस है, उसको माइंड को कंट्रोल करना चाहिए। मतलब यू शुड बी वेरी स्ट्रांग फ्रॉम योर इनसाइड, ताकि आपके जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो आपको बिल्कुल इम्पेक्ट ना करें। नो डाउट एक्सटर्नल फैक्टर्स का इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी पे होता है, बट यू if you are internally very strong with your beliefs, with your emotions, and you know how to act with your how to use your positives and negatives. I mean, everyone has their positive and negatives, but the most important thing is to how to utilize them. I mean, there comes the acceptance actually, कि आप अपने नेगेटिव्स को भी एक्सेप्ट करें, आप अपने पॉजिटिव को भी एक्सेप्ट करें। इट्स नॉट, ये जरूरी नहीं है कि आप अपने नेगेटिव्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना शुरू हो जाएं, तो देन आप अपनी पर्सनैलिटी से हट रहे हैं। ठीक है, आप अपने नेगेटिव्स को भी कंट्रोल करें और आप पॉजिटिव्स को भी साथ लेके चलें, और अपने बारे में जितना आप ज्यादा सेल्फ अवेयर होंगे, तो दैट वुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट फॉर यू गाइस टू डिफेंड योरसेल्फ फ्रॉम सोसाइटी। यस, उनका मुझे वो क्वेश्चन भी याद आ गया आपकी बात से। शी टॉक अबाउट क्लैरिटी। तो हमें क्लैरिटी इंडिविजुअल बेस पे कैसे मिल सकती है? बाय मेकिंग डिफरेंट टेबल्स। सपोज दीज आर, वी कॉल इट ABC मॉडल। सपोज देयर इज सम इवेंट, और उसके रिगार्डिंग जो है हमारी थॉट्स होती है और बिलीव्स, एंड देन अकॉर्डिंग टू दोज बिलीव्स वी फेस कंसिक्वेंसेस। सो वो ABC के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्प्यूट। सो इफ आई एम हैविंग नेगेटिव थिंकिंग अबाउट एन इवेंट, तो ऑब्वियसली उसका जो कंसिक्वेंस है वो भी नेगेटिव होगा। सो इन डिस्प्यूटेशन आई विल ब्रेक the chain of those negative thoughts, so that I have a clarity in a sense, what are my needs, what are my desires, what are my values. If we clarify these things, तो हम इंडिविजुअली उस चीज में इतना इन्वॉल्व होंगे दैट वी वॉन्ट हैव इनफ टाइम कि हम बाहर चीजों पे ध्यान दें एट फर्स्ट प्लेस। देन वी हैव टू फाइंड आवर लोकस ऑफ कंट्रोल। हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है? हम इन्वायरमेंट पे चीजों को ब्लेम कर रहे हैं या हम इनवर्ड ब्लेम कर रहे हैं? सो ultimately we have to take responsibility of our own thoughts, of our own feelings. Suppose if I am making responsible others for my own thoughts and own feelings, like if I say I'm getting angry because of him, or I'm getting sad because of her, so I'm actually, what I'm doing, I'm giving them responsibility that yes, you can make me angry, or you can make me sad. So we have to, at the end of the day, we have to take responsibility of our own thoughts and of our own feelings. जब हम वो responsibility ले लेते हैं, then we are independent in our own selves. फिर हम किसी पे dependent नहीं होते, and we don't cry for help. Yes, that's right. अच्छा, इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करूंगा कि देयर कम्स अ पॉइंट, नॉर्मली जो अब मुझे रियलाइज हुआ है पास्ट एक्सपीरियंसेस से, व्हेन आई टॉक टू पीपल, एक मेन इशू हमारी सब जनरेशन का ये है कि हमारी लाइफ में से एक मीनिंग अटैच जो होना चाहिए हमारी लाइफ के साथ, वो मीनिंग भी अटैच नहीं होता। हम अपनी लाइफ को एक मीनिंगफुल तौर पे नहीं लेके चल रहे होते। वी डू हैव अ सेट पैटर्न ऑफ लिविंग कि हमने एजुकेशन लेनी है, देन वी हैव टू गेट मैरिड, फैमिली, एंड देन वी हैव टू गो डाउन। सो आई गेस इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम अपने आप को, अपनी लाइफ को एक एक उसके साथ कोई पॉजिटिव मीनिंग अटैच करते हैं, दैट वी हैव टू गिव समथिंग आउट इन सोसाइटी एज वेल, कि अगर ठीक है आपका ब्रेड एंड बटर सॉर्ट आउट हो गया, तो देन देयर शुड बी समथिंग यू आर कंट्रीब्यूटिंग इन योर सोसाइटी एज वेल। और यही चीज अगर हम उसको जरा नीचे ले आए स्कूल लेवल्स पे, तो अगर हम बच्चों को स्टार्ट में ही ये जरा पेरेंट्स अगर प्रोग्राम करना शुरू करते हैं कि उनको एटलीस्ट लाइफ में कोई कोई मीनिंग अटैच कर दें, कोई पर्पस उन्हें दे दें। बिकॉज नॉर्मली व्हाट आई सी इज even the graduates and very professional, normally I do call these some people who are working in corporate sector, I call them corporate slaves, because उनकी लाइफ में एक कॉर्पोरेट कल्चर इतना कंज्यूम हो चुका होता है कि वो जो एक्चुअल इसेंस ऑफ जो जिंदगी का है वो उससे बहुत ज्यादा पीछे हट जाते हैं। तो हमें लोगों को अपनी ऑब्जेक्टिव लाइफ में एक ऑब्जेक्टिव सेट करने की बहुत जरूरत है, और ऑब्जेक्टिव एक्विजिशन का ना हो। आई मीन नॉट रिलेटेड टू मनी मेकिंग और टू एक्वायर थिंग्स। it is about to lose your own self and to just try to give something out to society, to other self. So I guess जो आपको आउटकम या जो सेटिस्फेक्शन और आई वुड से जो आपको
in terms जो आपको उसकी खुशी मिलती है, that doesn't depreciate. आप कोई भी फिजिकल चीज, कोई भी फिजिकल एंटिटी को एक्वायर करते हैं, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डेप्रिशिएट हो जाती है, एंड देयर कम्स, और वो कीप ऑन इवॉल्व होती रहती है हर चीज. तो ट्राई टू इन्वेस्ट योर टाइम एंड in money or whatever resources you have, try to invest in your own self rather than acquiring physical resources. So इसी चीज को हमें लेके जाके नीचे डाउन स्ट्रीम में लेके जाना चाहिए स्कूल लेवल तक, कि हमें अपने बच्चों को एक मीनिंग साथ अटैच करते जाना चाहिए कि भाई education is not just for the sake of to earn money, but you have to be a very I mean reasonable human being in society. क्योंकि वो जो अदब आदाब हैं वो आपके बच्चे को आने चाहिए, और वो उसका जिंदगी का मकसद जो है वो सिर्फ पैसे कमाना नहीं होना चाहिए. पैसे ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अर्न अ गुड लिविंग, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद एवरीवन, दैट दे हैव टू गिव समथिंग बैक टू सोसाइटी. तो उस चीज की रियलाइजेशन भी बहुत जरूरी है. और ये सब बातें जो मैं सेल्फ अवेयरनेस और इंटरनल सेल्फ एफिकेसी और इसकी बात कर रहा हूँ, ये हमें अपने आप के ऊपर खुद काम करने की जरूरत है, कि इफ वी स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर ओन सेल्फ, देन वी वुड बी इन बेटर पोजीशन कि हम इस मैसेज को आगे कन्वे कर सकें, और वी वुड बी इन बेटर पोजीशन कि हम उसको एज इट इज आगे ट्रांसफर कर सकें. तो ये चीजें, एक नॉलेज भी पास ऑन करने की जरूरत है. दैट इज व्हाई आई मीन आई वुड मेक अ कनेक्शन ओवर हियर कि जो मेंटल हेल्थ है वो आपकी इंडिविजुअल जो आपका माइंडसेट है उससे बहुत ज्यादा इम्पेक्ट होता है. तो ये चीज कहीं ना कहीं जाके आपकी पूरा साइकिल कंप्लीट कर देती है, कि आपकी जो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है, दैट बेसिकली लीड्स टू योर मेंटल वेलबींग. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. सर बिलाल, आपने जो भी बात की, आई वुड लाइक टू ऐड कि जो जो चीजें आपने भी कही वो अपने स्कूल लेवल पे आई हैव इम्प्लीमेंटेड देम. मैं अपने बच्चों को ये बात जरूर कहती हूँ कि व्हेन यू लीव दिस प्लेस यू नीड टू पे बैक टू द सोसाइटी. ये भी लास्ट वीक हमारी फेयरवेल हुई थी ग्रेड 8 की, तो आई आस्क देम टू पे बैक. तो मैं ये कॉन्सेप्ट बच्चों को जरूर देती हूँ फ्रॉम डे वन कि आपने एक अच्छा इंसान बनना है. डॉक्टर इंजीनियर इज द सेकंड प्रायोरिटी. इसके अलावा कोई भी प्रोफेशन चुने, बट योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग और पे बैक करें सोसाइटी को. एग्जैक्टली. आपको मैं अभी रिसेंटली एग्जांपल देता हूँ. व्हेन आई मेट माय साइकियाट्रिस्ट लास्ट सेशन, तो मैंने उनके साथ भी ये इशू रेज किया था कि आई एम अफोर्डिंग माय आई मीन ट्रीटमेंट मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं अपना ट्रीटमेंट अफोर्ड कर रहा हूँ, लेकिन देयर इज वन क्लास ऑफ पीपल दे कैन नॉट अफोर्ड दिस ट्रीटमेंट. आई मीन ये ट्रीटमेंट इतना इजीली अप्रोचेबल भी नहीं है और इतना अफोर्डेबल भी नहीं है कि एक आम आदमी इसको अफोर्ड कर सके. सो ही कीप्स ऑन लिविंग जस्ट लाइक दैट, और वो अपनी जिंदगी को फुल पोटेंशियल के साथ वो अपनी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही उसकी. तो he himself admitted this thing, and no offense to doctors or psychologists, but he himself admitted कि there is this is the issue in our society, that he himself agreed on that, कि हमें जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उस चीज का वो हम ज्यादा उसको देख रहे होते हैं, लेकिन एट द एंड वी शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल विद सम ऑफ द पीपल जो वाकई जिन्हें जरूरत होती है इस ट्रीटमेंट की. वी शुड बी फ्लेक्सिबल ऑन दैट. और हमारा एक मकसद ये भी है कि हम इस जो सप्लाई डिमांड बेसिकली है, बिकॉज आप देख लें कि साइकोलॉजिस्ट कितने हैं और डॉक्टर्स कितने मार्केट में आ रहे हैं. ठीक है, उसकी रीजन यही है कि डॉक्टर्स किसी और पर्सपेक्टिव में जा रहे हैं, और जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो किसी और. अब व्हाट ही केम अप विद द एक्सप्लेनेशन इज कि हमारी एजुकेशन इज सेम है, बट आई एम अर्निंग लेस देन द सर्जन हु इज ऑलमोस्ट ऑफ से हैविंग सेम एजुकेशन, बट ही इज अर्निंग मोर फ्रॉम व्हाट आई एम अर्निंग. सो उस इस चीज को मैं उस चीज से रिलेट करूंगा जो कि मैंने उससे भी कम्युनिकेट की, कि लाइफ में अगर आपका ब्रेड एंड बटर सॉर्ट आउट हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद ये सब चीजें सेकेंडरी रह जाती हैं. आप जितना मर्जी लाइफ में एक्वायर कर लें चीजों को, आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल आपकी वो सेम नहीं रहता. विद द पैसेज ऑफ टाइम इट डिक्रीजेस एंड यू हैव टू रीफिल दैट विद अनदर एक्विजिशन. So what I meant to say is what we have to do, all of us have to do is we need to make it affordable for every person in society. At least there should be some counseling centers
और कुछ नहीं दे व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि हम कुछ ऐसा सेटअप सिटीज में कर दें, हम रिप्रेजेंटेटिव्स हों, लीड्स हों सिटीज में, जो अपने एंड से अपने सोशल सर्कल में अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि एक सपोर्ट ग्रुप के तौर पे एक इनिशिएट कर सकें, जिसमें सब लोग एक कंबाइन एक जगह पे हों एंड दे स्टार्ट शेयरिंग देयर स्ट्रगल्स, देयर फीलिंग्स. क्योंकि व्हेन यू स्पीक, दिस इज आई हैव एक्सपीरियंस माई सेल्फ बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड दिस and we started giving the sessions in corporate companies. तो तब आई रियलाइज माई सेल्फ कि व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट माई इलनेसेस, तो उससे मुझे खुद भी एक किक मिल रही थी कि आई वाज फीलिंग बेटर. कि जितना मैं अपने स्ट्रगल्स के बारे में बात कर रहा था, तो उससे मुझे इंटरनली भी एक मोटिवेशन मिल रही थी, क्योंकि जब मैं अपनी स्ट्रगल पे बात कर रहा था तो पीपल माई वर गेटिंग अ पॉजिटिव वाइब आउट ऑफ मी. कि यार आई नॉर्मली यूज टू से दैट अगर मैं इस स्ट्रगल में अपने आप को फाइट कर रहा हूँ, तो अगर मैं कर रहा हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते. तो और मैं अपने साइकेट्रिस्ट से भी ये बात करता हूँ कि आई एम जस्ट वन ऑफ पर्सन जो कि पूरी कोशिश कर रहा है. आई एम गिविंग माई बेस्ट कि आई वांट टू गेट बेटर. बट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु जिनको रियलाइजेशन ही नहीं है इस चीज की, और ना ही वो अप्रोच करना तो दूर की बात, उनको रियलाइजेशन ही भी नहीं है कि वो अपनी लाइफ को उस फुल एक्सटेंट पे नहीं उसको लिव कर रहे हैं. जस्ट माया कमेंटेड कि स्ट्रेंजर्स के साथ वो शेयर नहीं कर सकती. आई गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल ऑन दिस वन. अब स्ट्रेंजर्स, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, यू कैन डिसएग्री ऑन दैट. अगर आप स्ट्रेंजर के साथ शेयर करेंगी तो यू डोंट नो योर द अदर पर्सन, ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट यू. उसके पास आपका कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, हिस्ट्री ही नहीं है. तो वो आप जो भी उसे कहेंगी वो उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर रहा होगा, क्योंकि उसके पास वो ही डजंट नो अबाउट यू. तो वो आपको, मेरे ख्याल में आपकी फीलिंग्स को ज्यादा अच्छे तरीके से सुनेगा, रादर देन अगर आप अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, अपनी फैमिली को बताएंगे. क्योंकि फैमिली, हमारे कल्चर में तो ऑफ कोर्स फैमिली इतनी एक्सेप्टेबल नहीं होती इस बारे में, दे जस्ट टेक इट वेरी कैजुअल. और फ्रेंड्स से आप एक दो दफा बात करेंगे तो उसके बाद आप तो खुद एक मेडिकल कंडीशन की वजह से उनको अवॉइड करेंगे, लेकिन फ्रेंड्स भी आपसे मिलना छोड़ देंगे बिकॉज दे थिंक कि यार ये हर वक्त डिप्रेशन और पागलपन की तरह की बातें करता रहता है. तो दे देमसेल्फ कीप यू एट अ डिस्टेंस. सो दैट इज राइट. So then I came up with this thing कि हमें बजाय मैं अपनों से बात करूं, I normally used to just, this is one therapy that my psychiatrist gave me, just to write it down. Whatever you are feeling, just write it down. Or if you can't write it down, you just speak it out, or you just need to share this thing with some stranger. Yes, Zubair, you want to add something? Bilal sir, मेरे ख्याल से 2 points बहुत important है यहाँ पर. पहली point ये है that we need to be strong in ourselves as well. और किसी जरिए से अगर हम किसी के support ढूंढ लो, we have to find a way to support ourselves, get it out, like you said, writing a journal or finding a significant other जिस पे हम trust कर सकते हैं, हो therapy हो या कुछ. But also breaking the taboo is also telling your own stories. मिसाल के तौर पर, it's not necessarily a mental health issue, but when I was, just to give an example, मैं सादिक पब्लिक स्कूल में मैं पढ़ता था, तो वहां पर एक there's an image जो कि मेंटेन करना होता है ना आपस में, because वहां पर रॉयल्टी बेसिकली जाते हैं. बट जब निकल गया था वहां से, ग्रेजुएट हुआ वहां पर, मैं वापस आया लाहौर. And I had a friend of mine, he was very nervous about his own personal life. मैंने उनसे पूछा कि शादी कैसे चल रही है आपकी, and he was very quiet. And finally, जब खामोशी कहीं कोने पे जाके हम आराम से बात कर रहे थे, then he said to me, he admitted to me कि मेरा divorce हुआ है. And I said, don't worry, I'm also divorced as well. So his face lit up like a light bulb. ठीक है? And just the fact that he knows someone else is going through that difficulty made it easier for him. So if when we tell other people things, Maya, you can't share everything with strangers. No, you can't, but you can share the right amount. You can make yourself relatable. क्या हाँ यार इसी तरह की difficulty मेरे साथ भी हुई. And that's also part of empathetic listening. एक लिहाज से this is the tool that you have in your empathetic listening toolbox. कि अगर कोई बंदा कहता है कि यार मेरे साथ ये मसला मसाल चल रहे हैं, when you're not a therapist, ठीक है, when you're not working, when you're not sitting in the therapist's sofa, when we're trying to promote awareness and breaking taboo, fi nafsi SAG के यही मकसद है ना, to spread awareness and break taboo, then we have to be comfortable with the fact that illnesses happen and travesty happens and disaster happens to everybody.
to make it relatable, हम खुला होके जो चीज easily हम बात कर सकते हैं, इसके बारे में बात कर लो. You don't have to reveal everything. You don't need to be vulnerable to everybody, but you need to find a way to be vulnerable. So we have strength on for ourselves as well, but also we need to be approachable and relatable. That's just what I wanted to say. Okay, anyone else? Anyone else has to add something? Yeah, I would like to add something, sir. अगर हम इसको को एक सोसाइटी, एक क्लब की फॉर्म में ले आए, लाइक जैसे कि आपको पता होगा टोस्ट मास्टर क्लब एक वो स्पेसिफिकली पब्लिक स्पीकिंग और लैंग्वेज के लिए, लेकिन वो हर शहर में उनका एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होता है और वहाँ पे लोग आते हैं और वो जो पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं वो उस प्लेटफॉर्म को यूज करके जाते हैं. लाइक अगर कोई कराची से है तो उन्हें मालूम होगा कि प्रोफेसर मुइज हसन जो है उनके यहाँ एक इस टाइप का एक सेटअप है, लेकिन वो ऑब्वियसली उनका एक बिजनेस है. तो हम इस टाइप का एक सेटअप बना लें कि उस शहर में रहने वाले लोगों जिनके अंदर ये अवेयरनेस है कि मेंटली हेल्थ कुछ है और इस मेंटल डिजीज के ऊपर बात होनी चाहिए और इसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेना चाहिए, तो वो सब लोग उस जगह पर. राबिया, आपका आवाज डिस्कनेक्ट हो गया. I guess राबिया का कॉल ड्रॉप हो गया. Okay, Maya is saying something. Okay, I normally do not take this to the religious level, but when I say self-awareness, being very strong to your inner self, so I think it is very important कि जब आप इंटरनली स्ट्रांग हो तो जो आपका कनेक्शन आपके बनाने वाले से भी होगा तो वो आप उस पर ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं और आपका बिलीफ आपका ज़्यादा आप अल्लाह की तरफ से भी आपकी जो बनाने वाला है उसकी तरफ से भी आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है. इसलिए आई इंसिस्ट ऑन दिस थिंग कि एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू बी वेरी स्ट्रांग फ्रॉम इनर सेल्फ, देन ही विल बी मच बेटर रिसोर्स फॉर द सोसाइटी ताकि वो एक्सटर्नल सोर्सेज से ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो. Anyone else? Because let's wrap it up for today. Yes, Zubair, you are saying right. Anyone else has to say some ending notes so we can just close this now? Okay. Yeah, I just few more important points I would like to add. अच्छा, कुछ चीजें मैं इसमें क्लियर करना चाहता हूँ कि जो सेल्फ अवेयरनेस ग्रुप का प्लेटफॉर्म है, we haven't built this for any donations, और इसमें जो मनी एस्पेक्ट है वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है. ठीक है. ऑफ कोर्स अगर हमारा मेन पर्पस और अप्रोचेबल जो एग्जीक्यूशन प्लान है वो इस तरह से होगा कि वी गोना टारगेट स्कूल्स, इंस्टीट्यूट्स and organizations. We are trying to collab with the institutes that are already working on mental health just to be part of the program. But we are not going to take any donations from companies. But what we would like to have is they're gonna sponsor us for the activities, for all the crafting that we need for executing the campaigns, on-site campaigns in universities and organizations. Recently spoke to a couple of universities as well, and they agreed on this thing. That they're going to provide us all the resources. If we are going to conduct any on-site campaign, they're going to provide us resources, but at individual level we are not going to accept any kind of donations, because once money, it's my internal belief कि जैसे ही आप जो पैसे हैं उसको आप इस कॉज के अंदर ले आते हैं तो इट्स वेरी हार्ड टू डिफाइन द लाइन बिटवीन, बिकॉज उसमें आपका सेल्फ इंटरेस्ट और काफ़ी चीज़ें आपको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाती हैं. So whatever we are going to do, we are going to do either slow or fast. It's going to be from our own pockets. There is no financial backing that we are going to have, but that doesn't mean that we are going very slow. We are trying to prepare a circle where we are going to generate the revenues from self-awareness group itself, that we are going to put an effort to make money, and we are going to reinvest that money within self-awareness group. तो हमारा एग्जीक्यूशन प्लान कुछ इस तरह से होगा. और नेक्स्ट मीटिंग में आई वुड लाइक टू हैव
this idea from all the volunteers as well, कि how what they can individually they see within their society, कि वहाँ पे कितनी organizations काम कर रही हैं, किस किस level पे काम कर रही हैं, और how we can collab with them, how we can support them, or how we can be part of them. We do not need to establish any brand. हमारा जो cause है वो that has to be very transparent. There should not be any dot on that cause कि हमें कोई question कर सके कि they are doing this for the purpose of money making or anything. That is the only reason that I want to keep this financial benefits out of the way. और इस पूरे कॉज में जो कुछ भी होगा वो हम विद इन सेल्फ अवेयरनेस ग्रुप ही जनरेट कर रहे होंगे और इन्वेस्ट कर रहे होंगे. That is one thing. Second is, what I'm trying to do right now is I'm just listing down all the psychologists we have on the platform, and all the anyone who seeks help, we refer them to the psychologists, to the professionals. Of course, at first we're gonna listen to them, their story, but we're gonna send it to the psychologist, and as per the need of the help seeker, we're gonna refer them to the relevant psychologist. सो उस तरह से हम एक एज अ ब्रिज काम कर रहे होंगे, जिसमें हम साइकोलॉजिस्ट के पास और उन जो स्ट्रगलर्स हैं उनको आगे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, दोनों का जो गैप है उसको क्लोज कर रहे होंगे. ठीक है. और मेन हमारा जो प्लेटफॉर्म का मकसद एक और भी है कि हमारी जो ब्लॉग्स हैं उस पे यू कैन ऑल ऑफ यू कैन राइट एनीथिंग, हम उसे पब्लिकली शेयर करेंगे. ऑफ कोर्स यू कैन राइट इन एज अ थर्ड पर्सन, यू डोंट नीड टू से योर ओन स्टोरीज, यू कैन जस्ट आप उसको अपने तरीके से बयान कर सकते हैं. बट उसका मतलब ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आए, और आई वुड रियली अप्रिशिएट कि हम उसे प्रेगमेटिक नॉलेज जो है वो लेके आए, रादर देन हम जो बुकिश या सुनी सुनाई बातें हैं उसको आगे रिप्रेजेंट करें. हम अपना जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा उसको हमने अपनी राइटिंग, अपनी ब्लॉग्स में उसे रिप्रेजेंट करना है, ताकि जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे आगे लोगों को उसकी हेल्प मिल सके. बिकॉज जो आपको बुक्स इंटरनेट रिसर्च में मिलेगा, दैट वुड बी वेरी क्राफ्टेड वर्जन में होता है, वो इतना रॉ नहीं होता और वो बहुत क्राफ्ट किया होता है. दैट इज द वन थिंग दैट आई पार्शली डिसएग्री विद द एनजीओज, दैट आई डोंट वांट टू कॉल दिस ग्रुप एज एन एनजीओ, कि they are more focused on the I mean, marketing, branding, these things. तो उस मार्केटिंग ब्रांडिंग के अंदर अंदर ना उनका मेन, दिस इज माय पर्सनल व्यू, कि मेन कॉज जो है वो पीछे चला जाता है थोड़ा सा. तो हमारा इसमें मैं फिर वही बात दोबारा कहूंगा कि ब्रांडिंग इज नॉट आवर पर्पस, बट यस वी वुड लाइक टू गिव एवरीवन अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो लोग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकें, अपनी स्ट्रगल्स को डिफाइन बता सकें, डंप कर सकें, एंड वी ऑल ऑफ अस वी वुड लाइक टू बी अ बेटर लिसनर. यस एग्जैक्टली जुबैर, यू आर सेइंग द ब्रांडिंग उस टर्म में मैं यूज कर रहा हूँ कि हम एज अ प्लेटफॉर्म को ब्रांड बनाएंगे, कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी अपने स्ट्रगल्स हैं उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स वी विल बी इवेल्युएटिंग दोज थिंग्स. और अगर किसी को वी श्योरली आस्क देम कि इफ दे नीड एनी प्रोफेशनल हेल्प, वी रिकमेंड देम. But that one more thing is regarding the confidentiality thing. We do, I mean, रिस्पेक्ट दैट, और हम उस चीज को बिल्कुल एक्नॉलेज करते हैं. इफ समवन डजंट वांट टू पुट अप देयर नेम्स, दैट इज दे हैव टू जस्ट से इट. सो हम उस चीज को भी सेंसर कर देंगे, उनके नाम वगैरह जो भी वो कुछ जितना कंटेंट दे आर विलिंग टू शेयर, वी विल बी शेयरिंग इट ऑन आवर वेबसाइट, ऑन आवर सोशल मीडिया अकाउंट्स. So what I want you guys to do is to give us content that we can publish with your names, or everyone will be having their share part on this thing. Or of course jo bhi active, everyone will be, this is going to be a collective effort. So सब अपना अपना पार्ट प्ले करेंगे, और ऑफ कोर्स वंस दिस गेट्स मैच्योर्ड समहाउ, तो इसको हम फर्दर एक्सपेंशन की तरफ लेके जाएंगे. बिकॉज इट्स माय शॉर्ट टर्म, हमारा विजन यही है कि हमने विद इन सिटीज हमने सपोर्ट ग्रुप्स अरेंज करने हैं, और हमने ऑन साइट कैंपेन ज्यादा करनी है, रादर देन कि वन साइडेड सेशंस करने हैं जिसमें वी नीड टू हैव एक्चुअली हमने लोगों को बेसिकली
मोटिवेट करना है कि दे नीड टू स्पेल आउट, दिस इज द कोर इसेंस ऑफ दिस ग्रुप, कि हमने उन्हें पुश करना है कि दे शुड स्पीक करें, इस बारे में बात करें अपने इमोशंस के बारे में. तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. आई गेस मैंने अपने सारे एस्पेक्ट्स को क्लियर किया. इफ एनीवन हैज एनी रिजर्वेशन इश्यूज तो वो शेयर कर सकते हैं. हमारी ईमेल्स, एक हमारा हैशटैग है आई एम लिसनिंग का, जिसमें जो हम नॉर्मली प्रमोट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे. हमारे यूट्यूब चैनल पे कंटेंट पब्लिश हो रहा है, हमारी वेबसाइट पे कंटेंट पब्लिश हो रहा है. और इफ एनीवन हैज, आई गेस हरीम और हिना इज अ रेगुलर कंटेंट राइटर, तो उनका कॉन्टैक्ट तो हमने ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ. इफ एनीवन एल्स हैज टू ऐड समथिंग तो दे कैन राइट अस. आई गेस अमार, इट्स टाइम टू लेट्स क्लोज इट अप. अमार. वेल, थैंक यू सो मच. आप लोग यहाँ पे थे और जो क्वेश्चन मैंने किया था मुझे बाकायदा उसका अच्छा सा आंसर मिला. बिल्कुल यही चीज मुझे और हमारे आसपास लोगों को ये चीज फेस करने को मिलती है. आई एम फ्रॉम बलूचिस्तान. तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि इसको हम लेके चलेंगे किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट या इन चीजों को नहीं देखते हुए, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा. आई थिंक एवरी पर्सन नीड दिस. और जहाँ रही मेरी बात, पहले इस चीज को नहीं मानती थी कि डॉक्टर से बात करने से आपका हर चीज सही हो जाता है, दिमाग सही हो जाता है और आप सुकून फील करते हो. लेकिन नहीं, फर्दर अभी फील कर चुके हैं बहुत सारे लोग कि नहीं यार, वी नीड समवन टू टॉक अबाउट.